According to you, what is the right way to start investing through mutual fund? Yeah, I think very important thing. शुरू करें कैसा, जो आप पहले बताए, जो मेरी माँ ने किया, एंड देन जो वॉरेन बफेट साहब बोलते रहते हैं और हम सभी लोग उसका आर्टिकुलेट करते हैं, तो एक ही जो चीज़ है, जब आपके पास कोई पूंजी आ जाता है या आपका अर्निंग शुरू हो जाता है, it is very important first to get that thing in our mind that income minus your investment is equal to expenses. ये जो फॉर्मूला है वो आपको एकदम पूरा दिमाग में रखना ज़रूरी है, बिकॉज इट हैपन्स उल्टा ही ऑलवेज. पैसा आ गया, मैं खर्चा करूँगा, फिर बाकी का सोचते हैं. वो जो सोचने वाली चीज़ है वो कभी होता नहीं, बिकॉज वो डिप्लीट होता रहता है, एंड देन द नेक्स्ट मंथ कम्स इन अगेन, वो जर्नी शुरू हो जाता है, एंड देन आप रूटीन में आ जाते हो, एंड द कहानी फिनिश हो गई. नाउ वंस यू गेट दैट फर्स्ट पार्ट डिसिप्लिन राइट, कि मुझे एक अमाउंट, चलो अमाउंट फिर भी नहीं आया, लेकिन एक जो थॉट प्रोसेस अगर करना ज़रूरी है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप is very important, that at least have some limited goals in your mind. As a young kid or a young person who is trying to enter or thinking about investments also, मुझे करना क्या है, what is the purpose of my thinking process? If you are thinking the first part, what is my purpose of that? Purpose is maybe small goals. Either I want to be self-reliant on my education. I don't want to depend on my parents are there, but I still want to educate myself, or I want to do something on my own. Do the goals, set your goals. And the third part is the mode of investing में, though early starters के लिए asset allocation is a difficult thing to make them understand, but at least talk to your parents or talk to someone कि the normal, if you go back to history or the old times, and today also people put money into different parts. डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कभी सेविंग्स करते हैं, कोई आरडी करता है, फिर उन लोग इंश्योरेंस गोल्ड में लेते हैं, रियल एस्टेट करते हैं, तो अलग. सो आपको अब सोचना चाहिए कि मैं अपने जो सेविंग्स को अगर मैं ठीक से करूँगा, तो लेट मी फर्स्ट बास्केट्स का सोचना शुरू करिए आप. सो once you start diversifying your thought process कि मुझे इस तरीके से सेविंग करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स इज़ द बेस्ट वे टू डू इट.